Okay. Bismillahirrahmanirrahim. This is the first introductory session of our long course that has been designed for the preparation of Part 2 FCPS, IMM, MS Part 2 of Obstetrics and Gynecology. I am Dr. Rashida Arif, working as Associate Professor of Gynae. And I am hopeful that this session will be very beneficial for all the candidates who are enrolled in the residency program of obstetrics and gynecology in Pakistan. So our objectives of today's sessions, we will discuss the new pattern of Part 2 FCPS exam. We will discuss that how the exam circuit is designed and what's the marking scheme, what type of stations they come in exam, what are the different modules, and how to prepare for the exam, and what's the study material that each candidate should study for the preparation of exam. All of us know that success is a journey. And जो इस जर्नी को एंजॉय करते हैं, जो इस राइड को एंजॉय करते हैं, they become successful. And आप में से सारे ही आई थिंक इस जर्नी को एंजॉय करते हैं. अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. So obstetrics and gynecology is a very dynamic field. This is not an easy. This is a 24 hours commitment. और जब आपने इस जर्नी को ज्वाइन किया होगा, ये अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी, तो आपको उस वक्त समझ आ गई होगी कि इसमें जो है वो कितनी इनपुट हमारी चाहिए. ठीक है, तो अब हमने शुरू तो कर ली है और हम इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से सक्सेसफुल भी बनाएंगे. और इस सेशन में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं. And this is the path. All of us, they have walked through the same path. इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है, जितने भी हम सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, they have started from the same step. जब हम MBBS कर रहे थे, जब हम हाउस ऑफ कर रहे थे, तो मे भी कोई ऐसा टाइम हो जब हम सोचते हो कि आई वुड नॉट डू इट. उसके बाद जो है वो किसी स्टेप पे हम देखते थे अपने सीनियर्स को कि वो कितने कमिटेड हैं, तो शायद हमने किसी स्टेप पे कहा हो कि आई कांट डू इट बट आई वांट टू डू इट. देन वी हैव think about it that how I can do it. Then we have tried to do it, and now we are at, all of you are at this stage that you are saying that I can do it. And I am 100% sure that you will do it, and on one day you will say, yes, I did it. So this is the same path, and this same path, all of us, they have traveled on the same path. But to be successful, all of us need positivity, hard work, commitment, passion, and be focused. Okay? And then your success will be ensured. Then what's the pattern of extended talks in Part 2 FCPS? जब हमने FCPS किया तो उस वक्त जो है वो 10 to 12 talks के stations होते थे और 2 long case होते थे. And these talk stations, they were not so much structured, they were not so much difficult. Long case, एक gynae का long case था और एक obstetrics का. But now this old format, it has been replaced by the new format. And this new format is more extensive and comprehensive testing of knowledge and skills. It includes a wide range of topics. There are role player based stations. There are no patients, simulated patients. होते हैं, actual patients नहीं होते. But on long cases, there are actual patients.
And due to a wide range of stations, it minimizes the bias due to patients and the examiners. If we talk about the distribution of the circuits, there are 12 to 14 stations and 10 minutes are allocated for each stations. There are 6 stations that are structured discussions. 3 are from gynae and 3 are from obstetrics. 4 are skill-based stations using mannequins. 2 are from obstetrics and 2 are from gynae. About 2 role play stations that include counseling and consent, 1 teaching station, and 1 is clinical audit, article appraisal, or research. So this is the basic design of the exam circuit of Part 2 FCPS. And in addition to these 12 to 14 stations, there are 2 long cases as well. Then if we talk about the distribution of the circuit in Abridged exam of MS of OBS and gynae, then there are 10 stations and 6 minutes are allocated for each station. In recent exam of 2024, stations that were included, they were about Depo-Provera injections, its uses, risk and complications, preconception counseling of diabetic patient. Then there was a station on postpartum hemorrhage and how to perform Beal suture. Then counseling of an anencapsuli patient. Then there was a station about research. Then skill stations about IUCD, insertion, surgical knots, and there was 1 station about labor board. Labor board is so important. It comes in every exam of IMM, Part 2 FCPS, Part 2 MS, Abridged exam of MS. So all of you, they must be expert in managing the labor board. How you will prioritize the cases in labor board, how you will start the discussion. So we will discuss all these steps during the course in labor module. Then if we talk about the distribution of circuit in Part 2 exam of MS, OBS and gynae, then there are 10 TOACS stations, 6 are observed and 4 are static, and 7 minutes are allocated for each station. ऑब्जर्व का क्या मतलब है कि वहां पे एक एग्जामिनर होगा, उसके साथ डिस्कशन होगी आपकी, और स्टैटिक का मतलब है कि यू हैव टू राइट द आंसर. Then there are 4 short cases, 2 are from gynecology and 2 are from obstetrics, and 7 minutes are allocated for each station. And 1 long case of 1 are either obstetrics or gynecology. And this is about the Part 2 exam. Then what type of stations they come? चाहे वो IMM है, चाहे वो Part 2 है, MS है, FCPS है. There are role player interactions. Role player interaction Part 2 FCPS में है, MS में actual patients होते हैं, ठीक है. There can be interaction with the examiner. Interaction with the examiner जहाँ पे होगा उसको हम structure discussion कहेंगे. Then there are skill stations, और skills हमें पता है कि कौन कौन सी आ सकती हैं, वो previous talks में जो आती रही हैं, वो हम सारी skills during the long course करेंगे. And then there can be stations about teaching, audit and research. Then how these stations they are marked? This is the new concept of Part 2 FCPS. There are 5 domains that are being tested. First is patient safety. Second is information gathering. Third is communication with the patient. And fourth is communication with the colleagues. And fifth is applied clinical knowledge. And marking is done according to these domains. Then what is included in patient safety? Patient safety includes data protection. For example, there is a station on audit, and you have to tell that you will take the approval from the ethical committee, and data will be collected according to the Data Protection Act. So this point comes under the domain of the patient safety. Then confirming the results belong to the patient. जब भी आपके पास कोई रिपोर्ट आती है तो आप उसमें सबसे पहले कंफर्म करते हैं पेशेंट का नाम और हॉस्पिटल नंबर, एंड यू विल टेल टू द एग्जामिनर in structure discussion that I have confirmed the name and the hospital number on this report, and this report belongs to this patient.
And if this is a simulated patient task, then you will tell to the patient कि मैंने आपका नाम और हॉस्पिटल नंबर कंफर्म कर लिया है और ये रिपोर्ट आप ही की है. This carries the marks under the domain of the patient safety. ठीक है. Then confidentiality. Confidentiality is very, very important in sexual health module, in subfertility module. At the very start, आपने पेशेंट को पहले ही बता देना है कि what will be discussed between you and me, it will be kept confidential. आपके और मेरे दरमियान जो भी बात होगी वो किसी तीसरे तक नहीं पहुंचेगी. अदरवाइज पेशेंट विल नॉट टेल यू एनीथिंग. ठीक है. और अगर आप इसको मेंशन नहीं करेंगे, यू विल नॉट रीअश्योर अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी, then you will lose marks in the domain of the patient safety. The next point, when to involve the senior and the other specialist. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक पोस्टमार्टम हेमरेज का स्टेशन है, तो आपने जो है उसमें बताना है शोल्डर डिस्टोशिया है, यू हैव टू डू कॉल फॉर हेल्प, यू हैव टू इन्वॉल्व योर सीनियर्स, एंड इफ यू डोंट मेंशन यू विल लूज द मार्क्स. देन ऑडिट एंड क्लिनिकल गवर्नेंस. क्लिनिकल गवर्नेंस के जो है वो 7 Ds हम हर स्टेशन में डिस्कस करते हैं, स्पेशली इन स्टेशंस ऑफ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस. ठीक है. तो उसमें जो है इफ यू डोंट मेंशन दीज steps of clinical governance, you will lose the marks of patient safety. WHO safety checklist. Before doing every procedure, you have to mention about WHO safety checklist. Then safe prescribing of medicines. Consent is very, very important in surgical procedures. And prioritization in the stations of labor board, gynae board. So all these points, they come under the domain of the patient safety, and you have to take care of these points. Then information gathering. Information gathering, it includes history. ठीक है. हिस्ट्री हम फाइनल ईयर से लेते आ रहे हैं, हमें पता है कि हिस्ट्री कैसे लेनी है. लेकिन Part2 FCPS और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम MS जितने भी ये एग्जाम्स हैं, इसमें हिस्ट्री आपने कैसे लेनी है? रेलेवेंट एंड टारगेटेड हिस्ट्री. आपने सारी हिस्ट्री नहीं पूछनी हर पेशेंट में. ठीक है. तो आपने उस स्टेशन के अकॉर्डिंगली जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो मिस नहीं करने. और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स. आपके पास एक रिपोर्ट आ गई है, आपने उसमें स्ट्रक्चर डिस्कशन है, फॉर एग्जांपल आपने एग्जामिनर के सामने इंटरप्रेट करना है रिजल्ट्स को कि इसमें क्या क्या पॉजिटिव फाइंडिंग्स हैं. ठीक है. और इनका क्या मतलब है. देन यू विल ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशंस अकॉर्डिंग टू दैट रेलेवेंट स्टेशन. देन रिव्यूइंग द रिकॉर्ड्स. फॉर एग्जांपल वी बैक का स्टेशन है, you will review her previous cesarean section notes and you will review her present antenatal record, and this will come under the domain of information gathering. Then encouraging questions. ठीक है. आपने पेशेंट से बार बार पूछना भी है कि क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है और आपका कोई सवाल तो नहीं है. आपने एंड में भी जो है वो उसको पूछना है कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. देन इन डोमेन ऑफ कम्युनिकेशन विद पेशेंट. जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ चेक की जा रही होती है. ठीक है. फिर आपने हिस्ट्री ले ली, एग्जामिनेशन कर लिया, इन्वेस्टिगेशंस आपको मिल गई, यू विल डिस्कस द डायग्नोसिस विद द पेशेंट. अगर ये सिमुलेटेड पेशेंट टास्क है तो आपने लेमन लैंग्वेज में उसे एक्सप्लेन करना है, उस वक्त ड्रॉ करके बताएं उसे. ठीक है. कि ये मतलब है इसका, ये आपकी तशखीस है. देन यू विल कम्युनिकेट द रिजल्ट्स. ब्रेकिंग बैड न्यूज. बैड न्यूज, ब्रेकिंग बैड न्यूज, ये पूरी एक स्कीम है कि हमने कैसे बैड न्यूज ब्रेक करनी है. वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द स्टेशन. देन you should know when, where, what, and how to communicate, and what not to communicate, and how you will deal with the angry patient and the relative. This will come under the heading of communication with patients. Communication with colleague. ये मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सबसे इजी डोमेन है. ठीक है. अगर आपका टीचिंग का स्टेशन है, आपको टीचिंग की स्कीम पता है कि आपने कैसे टीचिंग को लेके चलना है, आपका स्टेशन पास है. ठीक है. उसके बाद आपका जो है रेफरल कहीं आपने करना है, आपने पीडियाट्रिशियन को इन्वॉल्व करना है, आपने जो है वो कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, आपने अदर स्पेशलिटीज को इन्वॉल्व करना है. दिस विल कम अंडर द डोमेन ऑफ कम्युनिकेशन विद कोलीग.
देन हैंड ओवर स्टेशंस, लेबर बोर्ड, गायनी बोर्ड, ठीक है, एमडीटीज, मतलब आप जो है वो सिर्फ एक लाइन में आपकी ये डोमेन कवर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी विद डायबिटीज है, simply say that this is a high risk pregnancy. I will involve diabetologist, endocrinologist, तो आपकी जो है वो डोमेन कवर हो जाएगी। तो एमडीटी जो है ऑन्कोलॉजी है, ठीक है, उसमें जो है वो आप कहें कि आई विल इन्वॉल्व द सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, सीनियर नर्स, ठीक है, एमडीटी। तो आपने एक लाइन बोलनी है और आपकी ये डोमेन कवर हो जाएगी। But if you have missed this line, then you will be failed in this domain. Then applied clinical knowledge. जितने भी लोग बैठे होते हैं एग्जाम देने के लिए, वो थ्योरी पास करके बैठे होते हैं, उनका नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, आपने सब गाइडलाइंस पढ़ी हुई होती हैं, and you will be tested regarding knowledge according to that relevant station. And you have to study evidence-based practice guidelines. You should know where is the limitation of evidence. You should know the guidelines and the protocols and the current literature. Then there are different modules, और ये मॉड्यूल वाइज जो है वो हम इस कोर्स को लेके चलेंगे। इस मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली ही आपके जो है वो एग्जाम में स्टेशन आते हैं। हर मॉड्यूल में से एटलीस्ट एक स्टेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर मॉड्यूल है, डिलीवरी एंड पोस्टमार्टम। कुछ लोग इसको दो में भी डिवाइड कर देते हैं, वो डिलीवरी वाला सेपरेट कर देते हैं, पोस्टमार्टम वाला सेपरेट कर देते हैं। देन टीचिंग मॉड्यूल, एंटीनेटल केयर, अर्ली प्रेगनेंसी, मेडिकल डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी, कोर सर्जिकल स्किल्स एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इसको भी कुछ लोग दो में डिवाइड करते हैं कि कोर सर्जिकल स्किल्स सेपरेट कर देते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केयर सेपरेट कर देते हैं। देन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सब फर्टिलिटी, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सब फर्टिलिटी कुछ लोग सेपरेट रखते हैं, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सेपरेट रखते हैं, but I will discuss it as one module. Then urogynecology and gynecological oncology. So the important stations in the labor module, they are VBAC, labor mode. We will discuss about the preterm labor stations, induction of labor, management of complications of labor, previous difficult labor, PPS, third degree, fourth degree perineal tear, shoulder dystocia, ruptured uterus, then labor care guide. And in second module, we will discuss about forceps, vacuum, elective and emergency cesarean section, second stage cesarean section, postpartum hemorrhage, uterine rupture, IUD, retained placenta, uterine inversion. In postpartum module, we will discuss about the stations of maternal collapse, retained placenta, then PPS, lactation problems, perineal trauma management, infections, psychiatric problems, like postpartum blues, depression and psychosis, and the bladder problems. टीचिंग में आपका कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कोई आपकी स्किल भी आ सकती है, कोई डिस्कशन भी आ सकती है, तो every station it can come as teaching, and we will discuss these topics in the teaching module. Audit, research, appraisal, consent, sexual assault and domestic violence. We will discuss all these stations in the teaching module. In antenatal care, the stations that can come: medical disorders, growth abnormalities like small for gestational age, IUGR, large for gestational age, macrosomia, polyhydramnios, oligohydramnios. Then complicated pregnancies like preeclampsia, multiple pregnancies, breech presentations, obstetric cholestasis, antepartum hemorrhage. देन अल्ट्रासाउंड स्कैन एंड फीटल एनॉमलीज। कोई भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट रखी हुई हो सकती है, उसमें कोई फीटल एनॉमली दिखाई होती है और उसको आपने मैनेज करना होता है। प्री नेटल डायग्नोसिस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देन प्री टर्म लेबर एंड प्री प्रॉम। अर्ली प्रेगनेंसी केयर का मॉड्यूल बहुत छोटा सा मॉड्यूल है, बट दिस इज सो इम्पोर्टेंट दैट in every exam there is a must station from this module. तो आपने ये 4-5 चीजें करनी है और ये आपका मॉड्यूल कवर हो जाएगा। मेटरनल मेडिसिन में कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इसके अलावा जो है इन्फेक्शंस इन प्रेगनेंसी लाइक CMV, HIV, herpes, hepatitis एंड चिकन पॉक्स।
In core surgical skills, all the surgical procedures can be included: cesarean section, hysterectomy, laparoscopy, stereoscopy, and in addition to these, it includes bowel, bladder, and ureteric injuries repair. In post-operative care, there can be discussion of post-operative care of various procedures, then care of women who have undergone complications like ureteric, bladder injury, postpartum hemorrhage, obstructive labor, or perineal tear. Then in gynecological module, there can be stations about menstrual disorders, developmental anomalies, menopause and HRT, pelvic pain, vaginal discharge, benign tumors of the uterus and the ovaries like fibroids, ovarian cysts. And in subfertility module, there can be stations about female infertility, male infertility, ART, and recurrent pregnancy loss. In sexual and reproductive health module, you can be asked about contraception, sexually transmitted infections, sexual abuse, and emergency contraception. Then in urogynecology module, there can be stations about pelvic organ prolapse, urinary incontinence, and you should know how to do urodynamics, what investigations will be done in each station, what are the different treatment strategies, including different types of surgeries. Then in gynecological oncology, you will be asked about all the gynecological cancers, including endometrial, ovarian, cervical, and the vulval cancers, and different types of screenings like pap smear, cervical screening, cancers in pregnancy, chemotherapy, and radiotherapy. Okay, so this is about the different modules, and we will cover these modules one by one during the long course. Then what type of study material you have to use? इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने फ्रॉम डे वन आपने अपनी एक बुक बना लेनी है, ठीक है, अपने नोट्स बना लें, वो सबसे अच्छी बात है। अगर आप अपना सारे नोट्स नहीं बना सकते तो आप अपनी एक बेसिक बुक रखें, वो ड्यूहर्स भी हो सकती है, वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन भी हो सकती है, और उसके साथ आप जो भी गाइडलाइन पढ़ें या जो भी आपको जो है वो न्यू अपडेटेड गाइडलाइंस हैं या जो भी है उसके ऊपर आप अपने स्टिकी नोट्स लगाते रहें, ठीक है, ताकि एट द एंड ये ना हो कि लास्ट वीक में आप बैठे और आपको समझ ना आ रही हो कि आपने कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ा था और कहाँ से रिवाइज करना है। एंड एज पॉकेट बुक या एज बेसिक बुक आप अपने साथ 10 टीचर्स रखें या चर्चिल और पॉकेट ऑक्सफोर्ड रखें, और गाइडलाइंस आपने सारी पढ़नी है। यू हैव टू रीड आरसीओजी गाइडलाइंस, नाइस गाइडलाइंस, एंड एसओजीपी गाइडलाइंस, and this is the most important slide of this session. For quick revision, you have to make the notes that are easy to read, reread, and retain. इस एग्जाम के लिए बेसिकली क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। जितनी आपने ज्यादा रिहर्सल की होगी उतना ही एग्जाम ये आपके लिए इजी होगा। और अगर आप एक टॉपिक एक दफा एक बुक से पढ़ रहे हैं, दूसरी दफा दूसरी बुक से पढ़ रहे हैं, तीसरी दफा तीसरी बुक से पढ़ रहे हैं, तो वो आपको रिटेन नहीं होगा। इसलिए अपने नोट्स बनाएं या अपनी एक बुक रखें जिसके ऊपर आपने ये सारी चीजें जो है वो पेस्ट करें और उसी को फॉलो करें। Add short notes, references for last week revision. This is the teaching schedule which we will follow during this long course, and we are starting from the labor module. Okay, and one by one we will discuss all these modules. Then MRCOG 3 books, how to study. I will upload all these modules on my all these books on my website. What you will do? You will read side by side while studying the topics. Get orientation of questions and mentally prepare the answer. Recheck yourself what points you have got and what points you have missed. For example, आपने पेरिनियल टीयर की गाइडलाइन पढ़ी, उसके बाद जो है वो आपने ये बुक खोली, उसमें आपने देखा कि पेरिनियल टीयर के स्टेशंस कहाँ पे हैं, ठीक है। इसकी एक लिस्ट भी हम अपने कोर्स कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करेंगे कि कौन से टॉपिक कहाँ पे दिए हुए, कौन सी बुक में किस पेज पे। तो वो जो स्टेशन आप वहां से निकालेंगे
उसका सिर्फ आप सिनेरियो वहां से लेंगे, फिर आप अपने माइंड में रिहर्स करेंगे कि इसके जो है वो क्या क्या आंसर होंगे, क्या की होगी, मैंने हिस्ट्री कैसे लेनी है, उसके बाद मैंने डायग्नोसिस कैसे एक्सप्लेन करनी है, फिर मैंने मैनेजमेंट कैसे करनी है। ठीक है, आप उस बुक की को फॉलो ना करें, क्योंकि बुक्स में जो है वो बहुत सारी चीजें ओल्ड भी होती हैं। एंड इट इज बेस्ट इफ यू हैव अ स्टडी पार्टनर। आप दो लोग आपस में डिस्कस कर लें, व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लें, गूगल मीट पे डिस्कस कर लें, अगर आप जो इकट्ठे बैठ नहीं सकते, बट स्टडी विद ईच अदर। एक दफा एक कैंडिडेट बन जाए, दूसरी दफा जो है वो दूसरा कैंडिडेट बन जाए, पहला एग्जामिनर बन जाए। ठीक है, इसी तरह आप लॉन्ग केस की प्रैक्टिस भी करें। तो इस तरह से आपने इन बुक्स को पढ़ना है, साथ साथ करना है। लॉन्ग केस बुक्स जो है वो कोई नहीं है, वो आपने बेड साइड पे ही डिस्कशन करनी है। आपने एक पेशेंट का केस सिनेरियो लेना है, और उसी के जो है वो आपने देखना है कि मैं इससे हिस्ट्री कैसे लूंगी, इसके एग्जामिनेशन में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशंस कौन सी होंगी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगी, व्हाट विल बी द प्रोविजनल डायग्नोसिस, एंड व्हाट विल बी द मैनेजमेंट। ओके, सो आपने गाइडलाइंस सारी पढ़नी है, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो हर किसी की फिंगर टिप पे होनी चाहिए। यू कैन गो थ्रू दी स्लाइड्स। ओके, सो you have to make a little effort each day, and it will add up to big results. जो कैंडिडेट मैंने देखा है कि अपनी रेजिडेंसी में अच्छे होते हैं, उनका एग्जाम भी ऐसे निकल जाता है। बट everyone is not like that. You have to put that extra effort. It should be extraordinary. एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये नहीं है कि कोई जो है वो कोई फलाई मखलूक, कोई आपने कोई ऐसा काम करना है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने के लिए, या कोई खलाई मखलूक कर सकती है वो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आपने हफ्ते में एक टॉपिक शुरू किया है तो आपने उसके सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लेने हैं। आपने उसकी गाइडलाइन भी पढ़ लेनी है, आपने उसकी बुक उसको बुक से भी पढ़ लेना है, आपने उसके स्टिकी नोट्स बना के अपनी बुक पे भी पेस्ट कर देने हैं, जो भी आपका रिवीजन मटेरियल है। उसके बाद आपने उसके जो है वो देख लेने हैं, केसेस भी देख लेने हैं कि इसके कौन कौन से केसेस लॉन्ग बुक्स में हैं, या इसके कौन कौन से टॉक्स के स्टेशन हो सकते हैं। So from each aspect, your that topic will be prepared. ठीक है, और शुरू से ही जो है फॉर एग्जांपल अगर दो लोगों की इंडक्शन हुई है, तो वो दो लोग आपस में मिल जाएं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, और ये एग्जाम आपके लिए फिर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ओके, so I will upload this video on the YouTube. If you have any question, you can post in comments. And thank you so very much. Wish you best of luck. Thank you.